ये प्रूव करता है कि द यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स स्लोली एक्सपैंड हो रहा है. और उसका एक और इम्प्लिसिट मीनिंग है कि द यूनिवर्स, अल्लाह हैज़ कंट्रोल ओवर द यूनिवर्स, ही हैज़ द सुप्रीम पावर, राइट. तो हमारे ख़वातीन जो हैं फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद अल-फिहरी, ये गोल्डन एज में वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी कायम करे थे. तो आज के ज़माने में हज़ारों वी हैव टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड वर्ल्ड इज़ रनिंग ऑन इट. तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कायम किया था. बेंगलुरु के HBR लेआउट की मस्जिद-ए-इब्राहिम में हाल ही में इस्लामी नमائش मुनक़द हुई. इस मौके पर बच्चों ने जिस अंदाज में मालूमात फराहम की वो काबिल दीद थीं. 3 हिस्सों पर ये नुमाइश तरतीब दी गई थी. पहला हिस्सा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा हिस्सा कुरान और साइंस, तीसरा हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स टू द वर्ल्ड. इस नुमाइश को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मस्जिद-ए-इब्राहिम पहुँचे. बड़ों के साथ बच्चों ने भी नुमाइश के मुख्तलिफ उन्वानात को एक्सप्लेन किया. नुमाइश के सिलसिले में जानकारी फराहम करने वाले स्टूडेंट्स का अंदाज़े बयान हर एक को मुतासिर कर रहा था. पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट. तो अभी कुरान इज़ लाइक उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में है कुरान, राइट. क्योंकि अगर ह्यूमंस ने लिखा होता, इंसानों ने लिखा होता, तो इसका मतलब कोई एरर्स होते हैं ना, कोई गलतियाँ होती कुरान में अगर इंसान करता है तो. लेकिन इंसान ने नहीं किया, विच मीन्स के कोई सुप्रीम क्रिएटर से आया ना, कुछ सुप्रीम बीइंग से, राइट. तो अब कुरान में कोई मिरेकल्स हैं, हिस्टोरिकल मिरेकल्स. अब वो मिरेकल्स सच हुए हैं, अब प्रूवन टू बी ट्रू, राइट. तो अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ, पानी इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ. नाउ समबडी, कोई आकर ऐसा गेस नहीं किया ना, हाँ पानी इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसे तो नहीं हो सकता. पहले कोई सुप्रीम बीइंग होगा जिसने, विच वॉज गॉड, उन्होंने रेवलेशन नीचे भेजा, उन्होंने आयतें कुरान के नीचे भेजी, और जिससे हमें पता चला कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट. फिर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज़ इंटरेस्टिंग. ओके, जब साइंस जस्ट एस्ट्रोनॉमी जब प्रिमिटिव था, अल्लाह ने एक कुरान का वर्स भेजा, और मैंने ही यूनिवर्स को बनाया हूँ, एंड इंडीड मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ही उसका मालिक हूँ, राइट. अभी ये प्रूव करता है कि द यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स स्लोली एक्सपैंड हो रहा है. और उसका एक और इम्प्लिसिट मीनिंग है कि द यूनिवर्स, अल्लाह हैज़ कंट्रोल ओवर द यूनिवर्स, ही हैज़ द सुप्रीम पावर, राइट. नाउ लाइंग एंड मूवमेंट, तो द प्रॉफिट के टाइम पर एक आदमी था, वो क्रूअल था और ऑप्रेसिव था, ठीक है. वो तो अल्लाह ने उसके ऊपर एक आयत भेजी. इन दैट ही सेड कि अगर ये नहीं रुकेगा तो हम इसके फोरहेड से इसको एक्सपोज करेंगे. ना इस फोरहेड से ही मेंट कि हमारा जो ब्रेन का ये पार्ट है ना, दैट इज़ यूज्ड फॉर लाइंग एंड डिसीविंग अदर पीपल, राइट. एंड अल्लाह मेंशन्स द फोरहेड, दैट मीन्स अल्लाह ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ दैट. सो नाउ इन दिस स्लाइड वी लर्न अल्लाह हैज़ द सुप्रीम कंट्रोल, पावर एंड नॉलेज. जज़ाकल्लाह. मेरा नाम मोहम्मद असद रहमान, मैं ग्रेड 6 में पढ़ रहा हूँ इन OSS इंटरनेशनल स्कूल. अस्सलाम वालेकुम. Welcome to the program exhibition. I am going to tell you about few of the stuff which Muslims have contributed in the field of technology. I'll start with the flight. Nowadays we see everyone keeps traveling. So how it was invented? It was a Mr. Firnas, the one who in Turkey went to a tower called as Galata Tower, where he took the inspiration from birds, where he made a bird wings and he put it on himself, and he tried to fly from Galata Tower, top of the Galata Tower, to across the river on the other side of the bank. So this was one of the contribution of Firnas, and one of the airlines also is named on Firnas's name, that is Firnas Airlines. So it is a tribute to him which was given. So this was the first introduction to the world in terms of flights, where human could fly.
So similarly, we know that white light is made of vibgyor, that is 7 colors. So earlier in days, in Kamal al-Din al-Firsi was a scholar who had invented, who thought and who did research by instead of using prism, he used water droplet to show that white light is made of 7 colors. This is one thing, and other is that he was the one person who told that even after sunlight, because when he saw that when white light is enters in the water droplet, it disperses into 7 colors, so it kind of slightly bends, and that is the reasoning he gave, that why even after the namaz time, or even like maghrib time, or if you say in the sunset time, even for like 20-30 minutes there is still light there. Even after the sunset, the light bends, and we see that it's a little bright still, and that is the reasoning he gave back in hundreds of years ago. And similarly, we have a person named called as Xing He, who had traveled from China with his 7 ships. To nowadays we see ships made the longest ships are of 400 meters. Back then he had asked the people in China to build a ship of 137 meters, and he took 7 such ships to Africa, and that is where he had taken gold and grains for trading, and in return he brought back animals like camel and giraffe to China. So, and then we have his Al-Idris world map. So there was a person called as Al-Idris who like around hundreds of years ago, who had made a world map, who had given to the king of Italy, because he wanted to see how the world map looked, and he was the first person who had who made a rectangular map, but then he presented in a way that he told it's not straight, but it's curved in shape. And then we have these 3 brothers who had told that the circumference of earth. So in today's date, if we match the exact circumference with what he had given, there is just 10% error. And so this was in terms of technological advancement, what Muslim scholars and scientists were doing back in centuries. And now we have some contribution of female, what Muslim females have done. So I'll tell this in Urdu and English both. I'll start with university. तो हमारे ख़वातीन जो हैं फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद अल-फ़िहरी, ये गोल्डन एज में वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी कायम करे थे. तो आज के ज़माने में हज़ारों वी हैव टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड वर्ल्ड इज़ रनिंग ऑन इट. तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कायम किया था. मरियम एस्ट्रोलैबी. सो एक ऑब्जेक्ट होता है एस्ट्रोलैब नाम का, जो कि बहुत सालों से है, बट उसमें जो एस्ट्रोनॉमी वाले लोग यूज़ करते हैं. बट मरियम अल एस्ट्रोलैबी ने कुछ उसमें और तकनीकी कुछ एडवांसमेंट किया, जिसकी वजह से इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था क़िबला पता करने के लिए और नमाज के टाइमिंग्स पता करने के लिए. तो वो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, घड़ी टाइप का होता है, वो इन्होंने काफ़ी उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा. फिर वैसे ही काफ़ी सारे स्कॉलर्स रहे हैं. करीम बिन अहमद बिन मोहम्मद हातिम अल-मवाज़ी, इन्होंने सैयद बुखारी के हदीस पढ़ी, और इनके यहाँ बहुत किलोमीटर से लोग ट्रैवल करके इनके क्लास और लेक्चर अटेंड करने के लिए आया करते थे. वैसे ही सिमिलरली 2-3 और हैं हमारे ख़वातीन जो कि काफ़ी उन्होंने पढ़ा, और लोग मर्द और मतलब लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ आते थे और इनके लेक्चर सुना करते थे. बताता था समर बिन नाहिक अल-असदिया के बारे में, जो कि कंपेनियन थी, सहाबी थी, फीमेल सहाबी थी, जो कि मार्केट प्लेस में जाकर के एक पुलिस टाइप का रोल जो इनका कंट्रीब्यूशन था, कि वो पुलिस एग्जैक्टली नहीं थी, बट वो जाती थी मार्केट में, और मतलब एक इस तरह से जाती थी कि आदमी को लगे एक नॉर्मल तिजारत कोई करने वाला आया है, बट वो गौर करती थी जो लोग बेच रहे हो मार्केट में, वो सामान सही बेच रहे हैं या गलत कोई प्रैक्टिस नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर इनका ध्यान रहा करता था. तो ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है एक पूरे मार्केट सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए, कि कोई चीटिंग नहीं करे, कोई तौल में आगे पेश नहीं करे या कुछ गलत नहीं करे, उसको देखने के लिए. और उसके बाद रहता बिन्त अब्दुल्ला अत-तफ़क़िफ़िया जो हैं, ये हजूर को इन्होंने बोला था कि इनके घर में हस्बैंड ने काम नहीं करते हैं, उनके बच्चे कोई काम नहीं करते हैं, खुद से क्राफ्टमैन वुमेन थी, जो कि हैंड क्राफ्ट प्रोडक्ट बनाया करती थी और ख़ुद से जाके बेचा करती थी. तो उनके रिप्लाई में हजूर ने बोला था कि अल्लाह तुमको पूरा इसका अजर देगा, क्योंकि इनके हस्बैंड या कोई काम नहीं करते. तो उस ज़माने में इन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया था कि अपने हाथ से कुछ बनाया जाए,
जाके मार्केट प्लेस में इन्होंने खुद से जाके बेचा और अपना इनका घर चलता था। तो ये कुछ बात थी, मैं मुस्लिम फ़ीमेल्स के बारे में कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद सैफ़ अली ख़त्ताब है। कौन से इदारे से? मैं एक संपर्क का इदारा है, ये हमारे ये मस्जिद-ए-इब्राहिम जो है वहाँ पे हम लोग एज आ वॉल्टियर आके आज जो भी ये देख रहे हैं आप, कई तरह के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने रिसर्च करके बताने की कोशिश की है।